तो कल के लेक्चर में हमने लेवल 2 के कुछ एमसीक्यूज देखे थे और आपको बताया भी था कि लेवल 3 के जो है सम्स थोड़ा प्रैक्टिस करो और कुछ डाउट्स वगैरह अगर रहे तो पूछो. So I would like to ask all of you if you have any doubts in level 2 or level 1, you can just put it in the chat box so that we can discuss them. Yes, anybody? ठीक है. Let us start with the level 3. ओके, तो अभी इसमें देखो लेवल 3 के अंदर हम देखते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस है. यस, 65 से लेके यस ऑलमोस्ट 86 तक जो है लेवल 3 के क्वेश्चंस है. और उसके बाद फिर जो लास्ट ईयर पूछे हुए जो क्वेश्चंस है, मतलब जो अलग अलग एग्जाम्स जो होते हैं, तो एग्जाम्स को पूछे हुए जो क्वेश्चंस है तो वो भी यहाँ पे है, उसमें से कुछ उनको करने हैं. यस, चलो ठीक है. सो लेट अस डू इट वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल we'll see this question 65. A wire of length 1 meter fixed at one end has a spear attached to its other end. Okay, I'll just crop this question to the board. Okay, are the dark patches still there? Okay, ठीक है. तो just settings problem. Okay, तो देखो ठीक से यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर ये पार्टिकल घूम रहा है इस तरह से. So suppose that this is the center of the circle and the particle is rotated in this vertical circle like this. Okay, this way. Yes, so इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन वो परफॉर्म कर रहा है. अभी इसमें देखो, अगर सपोज वो जब टॉप पॉइंट पे जाएगा तो उस समय सिचुएशन कुछ इस तरह से होगा. यहाँ पे वो होगा और जो स्ट्रिंग है यस, और जब वो बॉटम पॉइंट पे जाएगा तभी भी स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल रहेगा इस तरह से. ठीक है ना. तो ये दो सिचुएशंस हम कंसिडर कर सकते हैं आराम से. तो फर्स्ट, इन द फर्स्ट सिचुएशन द स्फीयर विल बी एट द टॉप पॉइंट हियर इन दिस वे. ओके, and in the second situation the sphere will be there at the lowest point like this here. Yes, तो अभी इसमें दोनों situations के अंदर हमको tensions निकालने हैं. ठीक है ना. how much will be the tension in the string, we want to find it out. Okay, और उसमें भी ये दिया हुआ है कि the sphere is projected horizontally with the velocity √9g where it okay, तो इसका मतलब यहाँ पे जब वो लोएस्ट पॉइंट पे जब होता है तो वहां पे उसको हमने एक वेलोसिटी दिया है जो कि √9g के बराबर है. यस,
So in this way, here the velocity of this ball here will be root 9 times of g in this way. So velocity of this ball will be root 9 into g. ओके, तो अभी क्योंकि देखो होता क्या है ना, कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, ये हमको समझना है अच्छी तरह से कि when the ball will just describe the vertical circle, what will happen is it will experience the force due to the centrifugal force also. मतलब centrifugal force भी उसके ऊपर काम करेगा. अभी देखो जब वो लोएस्ट पॉइंट पे आएगा ना, तो वहां पे उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, उसको हम बोल देंगे Fc. और एट द सेम टाइम mg जो उसका खुद का वेट है वो भी तो उसके ऊपर काम कर रहा है, बराबर, जिसको हम mg बोल सकते हैं. तो इसलिए इस हालत में जो टेंशन रहेगा तो वो ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पे काम करेगा. तो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग हियर, if we call it as a TL, where TL stands for tension in the string at the lowest point. Okay, so what is the formula for this TL? It will actually be equal to the mg, मतलब the weight of the body, plus the centrifugal force Fc, which is actually the mv square upon r. So we can call it as m into vl. vl मतलब velocity at the lowest point upon r. r मतलब यहाँ पे लेंथ होगा एक्चुअली, इस जो रेडियस जो है तो वो एक्चुअली लेंथ ही बनने वाला है. length of the string is going to become the radius, which is already given to be 1 meter. करेक्ट है. तो इसलिए यहाँ पे हमको लेंथ के बदले 1 मीटर डालना है, मतलब रेडियस के बदले 1 मीटर डालना है. ठीक है, बट वेलोसिटी कितना होगा वहां पे, तो वो वेलोसिटी होगा रूट 9g, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर. तो अगर हम, और मास दिया है क्या उस इसका, अच्छा चलो ठीक है, मास की एक्चुअली जरूरत नहीं है क्योंकि इट विल गेट कैंसल्ड. ओके, so just try to find out this TL here. So what will be TL here? It will be m into g plus m into VL का square. What is VL here? It is going to be root of 9g and उसका square, and that is to be divided by r, which is 1. No doubt. So it will be actually TL becomes actually equal to mg plus what is this, रूट 9g का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बराबर, और बचेगा क्या, सिंपली 9mg बचेगा. और नीचे 1 जो है वो लिखा नहीं लिखा तो भी एक बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे बन जाएगा वो 9mg. करेक्ट है. यस, एंड हेंस वी कैन गेट दिस TL टू बी सिंपली इक्वल टू 10mg. ओके, सो हियर इट इज गोइंग टू बी 10mg, नो डाउट. चलो, now just try to find out what will be the tension in the string at this highest point here. So how will you get that? So अगर tension at the highest point हमको ढूंढना है तो कैसे मिलेगा हमको, तो उसके लिए देखो tension at the highest point, तो उसके लिए क्या कौन से forces इसके ऊपर काम कर रहे हैं highest point पे, वो जरा नोट डाउन करो. What are the forces acting on this particle at highest point? Number 1, ग्रेविटेशनल फोर्स, नो डाउट, वो तो हमेशा एक्ट होता ही है कि नहीं. तो इसलिए यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो तो काम कर ही रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल, जिसको हम mg बोल सकते हैं, नो डाउट. और एट द सेम टाइम द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल आल्सो बी एक्टिंग ऑन दिस बॉल हियर, बट दिस टाइम इट विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड्स. समझा क्यों? क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि वो हमेशा along the radius and away from the center हुआ करता है. We can call it as Fc. Okay, so Fc मतलब यहाँ पे centrifugal force है. ठीक है, तो अगर ये दोनों forces है तो इन दोनों के साथ एक force काम कर रहा है यहाँ पे, जिसको हम बोल रहे हैं tension in the string. करेक्ट है, because the string actually will be stretching this ball in the downward direction. तो ये जो string के अंदर का जो tension है वो भी यहाँ पे काम कर रहा होगा, उसको अभी हम नाम दे देंगे TH. चलेगा ना, TH. What is TH here? It is going to be the tension in the string at the highest point of its motion. Yes. So how will you get that? TH कैसे मिलेगा हमको? तो TH के लिए हमको फॉर्मूला मिलेगा, देखो TH is equal to, एक्चुअली यहाँ पे इन तीनों फोर्सेस के बारे में अगर हम इक्विलिब्रियम यूज करेंगे ना, तो दिस सिंगल फोर्स Fc is actually going to be the sum of these two, that is mg and th, and that's why we can construct an equation
that FC is going to be equal to the sum of, okay, TH and MG, right? तो अगर ये इक्वेशन यूज करते हैं तो इस mg को अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा TH is equal to FC minus mg, correct? And here FC is going to be actually m into v square upon r. Yes. ओके तो अभी इसमें माइनस mg, but are we going to get this velocity at this highest point here? इसको हम vh से डिनोट करेंगे, चलो vh चलेगा ना, vh. But how will you get the velocity at highest point here? To find the highest velocity at the highest point, we will have to use the energy conservation. Okay, when the particle moves from the lowest point to highest point, what happens is its potential energy actually increases. Okay, and at the same time its kinetic energy actually decreases, and hence we can say that the change in kinetic energy, okay, when the particle moves from the lowest point to highest point, the you can say the kinetic energy decreases. So you can say the decrease in kinetic energy here in from lowest to highest is actually going to be the increase in the potential energy. ये बात हमको यहाँ पे यूज करनी है, देखो ठीक से, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो जितने अमाउंट से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा उतने ही अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगा. अभी इसमें देखो व्हाट इज द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो उसके लिए हमको इधर का काइनेटिक एनर्जी, लोएस्ट पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी, उसको हम बोल देंगे KEL, चलेगा ना? KEL मतलब लोएस्ट पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी माइनस हाईएस्ट पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी, जो बनने वाला है KEH मतलब हाईएस्ट पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी, which should be equal to the increase in potential energy, which is nothing but the highest point का potential energy, मतलब इस लेवल का potential energy माइनस इस लेवल का potential energy. अभी अगर हमने इस लेवल को अगर ग्राउंड कंसिडर कर लिया, ये जो ग्राउंड लेवल है या लोएस्ट लेवल जो है उसको अगर हमने ग्राउंड कंसिडर कर लिया तो उधर का पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा, यहाँ पे ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा, 0 बन जाएगा. Do you agree with this? And since the potential energy of ground becomes 0, we can say the potential energy at the highest point will be exactly same as the change in potential energy when the particle goes from lowest point to highest point. So what is the increase in the potential energy of this particle when it goes from lowest point to highest point? Same as the potential energy at the highest point, which is going to be mgh here, where m is the mass of the body, g is the gravity, and h is going to be the height. Yes. अभी इसमें और एक बात गौर करो कि height कितना है. If you see carefully, then the height of this ball when it moves from lowest point to highest point here like this will be exactly same as the diameter of this circle, correct? Diameter, and diameter we already know that it is 2 times of r, correct? And since it is going to be 2 times of r, we can just replace it by that here. तो h के बदले क्या रखना है हमको, 2r रखना है, जिससे हमको यहाँ पे मिल जाएगा इधर mg as it is into h के बदले क्या आएगा, 2r. समझा ठीक से? r मतलब रेडियस ऑफ सर्कल और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग which is already 1 meter, right? And kinetic energy at the lowest point कितना है, it's going to be half m vl square, correct है, minus kinetic energy at the highest point, how much it is going to be half m vh square, correct है. Yes, if you just simplify this further, तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको इसमें से मिलेगा m can be taken just common. See clearly, m can be taken common. So if you take m out, half m also can be taken out, right? So if you take this half m common, we are left with vl square minus vh square inside, right? And then here it will be 2 mgr left inside in the other side, right? So m will just get cancelled, and here vl square minus vh square, यहाँ पे इस 2 को भी उस तरफ भेज दो तो वो 2 into 2 4 बन जाएगा. So we can get this 4gr,
And here now, in this case, as we have replaced this VL as root 9G here also. So in the same way here also we have to replace this VL by root 9G. इस VL को हमको root 9G से replace करना है, जिसके कारण ये जो है वो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से, तो वो हमको मिलेगा VL स्क्वायर ना यहाँ पे, तो रूट 9G का स्क्वायर माइनस VH का स्क्वायर is equal to 4RG, right? And hence we can just get this as 9G root square cancel, so इससे हमको मिलता है 9G minus VH square जो कि 4RG, but R is 1 na, so just replace it by that and get this as 4 into 1 into G, so that we can say this will just get simplified as इस VH को उस तरफ लेके जाओ और इस 4G को इधर लेके आओ, तो वो हमको मिल जाएगा 9G minus 4G becomes actually equal to VH square, and hence we can just get that VH square is actually going to be root 5G, 5G actually, right? 5G. And if we just take the square root on both sides, then we can just be able to get that VH is equal to root of 5G. Okay, but we want VH square only ना, तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमको रखना है, तो m को तो चलो हमने as it is रखा है, m is kept as it is, but VH is to be put here as root of 5G, okay, and the whole square kept as it is, and here R is going to be 1 again, and minus mg is also kept as it is, so that we can just get this as m into, अभी वापिस एक बार रूट और स्क्वायर कैंसिल होके बचेगा क्या, simply 5G, correct है, so here it is going to be 5G minus mg, so that we can get this as, yes, 5mg minus mg, how much it is, 5mg minus mg मतलब वो बन गया 4mg, correct है, yes, so it becomes 4mg. So this is the value of tension in the string at the highest point, and here this is going to be the value of the tension in the string at the lowest point. But what we want here is, just see the question, we want to find out the ratio of elongations of the wire when the spear is at the top and bottom point. Okay, तो अभी देखो elongation जो है, what will be the formula for elongation in the wire when it will be at the highest point? So elongation at the highest point will be denoted by, suppose elongation किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल l से डिनोट करते हैं, बराबर, सो इस केस में हम इसको l से डिनोट कर देंगे, elongation of the highest at the highest point will be tension at the highest point. Actually जनरल फॉर्मूला क्या है elongation का, पता है तुमको, जनरल फॉर्मूला इज l is equal to force F into capital L upon y into a, correct है, this is the formula for elongation. If you use it 2 times, so first time the elongation will be expressed as, elongation in the at the lowest point will be expressed as LL, which is going to be TL into L upon Y into A. Yes, but what is the elongation at the lowest point, we can see, तो अब यहाँ पे elongation at the highest point, तो highest point पे जो elongation बनता है वो बनने वाला है TH into L upon Y into A, correct है, and now if we just take the ratio of this LL to LH, तो elongation at the lowest point, नहीं हमको उल्टा करना है ना, तो उसके लिए elongation at the highest point ऊपर रखेंगे और elongation at the lowest point नीचे रख देंगे डिनोमिनेटर में, तो इन दोनों का अगर रेशियो ले लेंगे ना, तो हमको यहाँ पे TH और TL के रेशियो के बराबर ही वो मिल जाएगा, देखो ठीक से, because this elongation at the lowest point is proportional to TL and the elongation at the lowest point is proportional to TH, so everything else will get just cancelled, L and YA will just get cancelled when we will take the ratio of these two, and hence we'll get this simple ratio of TH to TL here. And what is the ratio of TH to TL? TH is already 4 mg and TL is already 10 mg, so if we just replace them by here, then we get this 4 mg upon 10 mg, which happens to be simply mg cancel,
and 4 by 10, which comes out to be 2 by 5, which is the correct option here. Very good. 2 by 5. That means it is first option here is going to be the correct one. Yes. Okay, if you want, you can take the screenshot. Okay. Let us see the next question. Check this question number 71. Yes, see this question number 71. Just read it fast. Okay, 8-meter long string of rubber having density 1.5 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube and Young's modulus 5 into 10 raised to 6 Newton per meter square is suspended from the ceiling of a room. Okay, the increase in its length due to its own weight will be. तो देखो अभी यहाँ पे the increase in the length due to its own weight. मतलब ये सपोज इस तरह का वायर है, ठीक है, ये इस तरह से सीलिंग से लटका हुआ है और अभी इसके ऊपर कोई दूसरा वेट हमने ऐड नहीं किया है, ठीक है. No external weight is added on to the wire, but this wire is going to extend due to its own weight. That means we can consider this wire to be just like a cylinder, एक जैसे एक रॉड के फॉर्म में ही कंसिडर कर लो उसको. इट्स सिंपली लाइक अ रॉड. ओके, एक इस तरह सा का रॉड है और जिसका कुछ डेंसिटी भी है और सपोज कि ये रॉड इस तरह से हमने सीलिंग को अटैच कर दिया. ये सपोज सीलिंग है और उसको हमने इस तरह से अटैच कर दिया, ठीक है. अभी इसके ऊपर दूसरा कोई लोड अटैच नहीं किया है, बट व्हाट विल हैपन हियर इज द होल मास ऑफ दिस वायर, ये पूरे वायर का जो मास है वो कैपिटल M, सपोज M हम उसको डिनोट करेंगे. सो दैट मास एक्चुअली विल just act on the center of mass, means midpoint of the wire. That mass or that weight of the wire will exert a force, gravitational force, which will be acting in the downward direction here, and that force will be effective at the center of mass only, or we can say at the midpoint of the wire only. तो इस तरह से इस midpoint के ऊपर एक force काम कर रहा होगा वायर के ऊपर जो कि M into G के बराबर होगा, where M is going to be the mass of the wire. पूरे वायर का जो मास है वो M रहेगा और G is going to be actually the gravity. So this mg force will be acting on the wire in the downward direction, and because of this force the wire will just get extended. मतलब ये सिचुएशन यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि the wire is extended due to its own weight. ओके, उसके खुद के वेट की वजह से वो वायर एक्सटेंड हो रहा है. तो इस केस में क्या होगा ना कि ये जो इफेक्टिव लेंथ है इस वायर का वो कितना होगा. ये देखो मास, ये mg जो है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे. हाउ कैन वी फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर. स्ट्रेचिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर will be found out to be simply equal to volume into mass into gravity. करेक्ट है, mass m of the wire into gravity g of the wire. ओके, बट मास जो है वो कितना होता है. मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है कि नहीं. तो उसको हम लिख देंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी एज इट इज. करेक्ट है, बट ऑलरेडी वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द वायर is always equal to the area
into length into density into gravity. तो ये एक्चुअली हो गया द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, करेक्ट है. So this is going to be the total force acting on the wire. We can give this as equation number 1. Now this force will produce the extension in the wire, but this extension will be produced in this effective length of the wire. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है जिसको हम L/2 बोल सकते हैं, तो यही इस वायर का इफेक्टिव लेंथ हो गया इधर से इधर तक, क्योंकि यहाँ पे ही तो फोर्स काम कर रहा है कि नहीं इस पॉइंट पे. तो यहाँ पे जो फोर्स काम करेगा वो इसके नीचे इस तरफ इसको खींचेगा. तो इसके लिए हम देख सकते हैं आराम से कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर विल गेट रिड्यूस्ड टू L/2 only. L/2 will be the effective length of the wire, and that's why this extension will be produced in this part only. No extension will be produced in this lower part, just because फोर्स तो उसके ऊपर काम कर रहा है ना, तो इसलिए फिर इस पार्ट में कोई एक्सटेंशन प्रोड्यूस होने का सवाल नहीं पैदा होता है. तो इसलिए एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस होगा वो इस वाले पार्ट के अंदर पैदा होगा, इसलिए हम ये L/2 जो है उसको इसका इफेक्टिव लेंथ बोल देते हैं. चलो ठीक है. तो अभी अगर इसको हम यूज करते हैं तो फिर टोटल ये जो है एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या होगा. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का जनरल फॉर्मूला होता है एक्सटेंशन इज इक्वल टू फोर्स, मतलब स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ, जो कि यहाँ पे कितना है L/2 है, करेक्ट है L/2, and that is to be divided by the area of cross section into y, that is Young's modulus of the wire, करेक्ट है. तो ये हमको यहाँ पे यूज करना है. तो अगर हम ये सॉल्व करेंगे आगे तो उससे हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से ये L/2 कंसिडर करना है. ये समझा क्यों L/2 यहाँ पे आया यहाँ पे, क्योंकि द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इज एक्चुअली गोइंग टू बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल टोटल लेंथ ऑफ द वायर. मतलब इस पूरे लेंथ का जो आधा जो है लेंथ वही उसका इफेक्टिव लेंथ बनने वाला है. तो इसलिए हम यहाँ पे L/2 यूज कर रहे हैं. तो चलो ठीक है, इफ f के बदले अगर हम ये वैल्यू उसका डाल देंगे तो क्या होगा, देखो ये पूरा f है कि नहीं हमारा, तो अगर वो f डाल देंगे इधर तो हमको मिलेगा a इंटू L इंटू रो इंटू G इंटू L/2, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय a इंटू y, करेक्ट है. जिसमें से अभी a कैंसिल हो जाएगा, देखो ठीक से. And once this a is get cancelled, we will be left with the formula for extension, that is rho, or we can say L square into rho into G upon y. So this is the simple formula for finding the extension produced in the wire due to its own weight. Okay, whenever the wire or any string just gets extended due to its own weight, the extension produced in it can be found out by using this ready-made formula, that is L square rho G upon y. Okay, but what is L length of the wire here? It is going to be 8 meter, right? So just put it here. So 8 का square यहाँ पे आ जाएगा into density कितना है, तो वो है 1.5 into 10 raised to 3. So यहाँ पे 1.5 into 10 raised to 3 आ जाएगा. Okay, and what is the Young's modulus of this wire? It is already given here. It is 5 into 10 raised to 6. Okay, so here it is going to be 5 into 10 raised to 6. Okay, तो यहाँ पे 5 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 5 3s are 15, but there is 1.5, so it will be 0.3 here, and this 0.3 will just get multiplied with 8 square. What is 8 square? It is 64. So 64 multiplied by 0.3 and multiplied with 10 raised to this 3 minus 6, which comes out to be minus 3, right? So in that way we can get this as minus 3 here. And if we just simplify this further, then we get this 64 multiplied by 0.3. How much it is? 4 3s are 12 and 6 3s are 18 plus 1 19. So 192 आएगा. But decimal point जो है वो एक digit पीछे है, तो 19.2, and that will be multiplied with 10 raised to minus 3 meter, which can also be written as 19.2 millimeter, or just 19.2 into 10 raised to minus 5 is the option here. But ग्रेविटी लिया ही नहीं क्या हमने? अच्छा, ग्रेविटी का वैल्यू लिया ही नहीं. यस, ग्रेविटी इज एक्चुअली 10.
बट वो लेने के बाद भी तो यहाँ पे 10 आएगा ना, तो 10 10⁻³ इंटू 10 कितना आएगा, 10⁻² आएगा ओनली। यहाँ पे 10⁻² आएगा, फिर जिससे वो 0.192 हो जाएगा, बट देयर इज नो ऑप्शन लाइक दैट। Might be there's some mistake in the question. Sir, हाँ sir, in the second last step, it should be h square upon 2, L square upon 2. हाँ, ये 2 हट गया ना यहाँ पे, बराबर। राइट 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 राइट। तो उस 2 की वजह से यहाँ पे नीचे 2 आएगा और इंटू 10 भी है ना। Okay, so it will be 190, हाँ, ये 64 इंटू 0.3 इंटू 10, ये कितना बनता है 192। नहीं तो ठीक है, ये रहने दो ऐसे ही। 19.6 19.2 ही लिखेंगे उसको, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विद 10⁻², so that it becomes, yes, 9.6 into 10⁻², yes, meter. So this will be actually the correct answer. Very good. Right. करेक्ट, ये 2 हम भूल गए थे इसलिए प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, समझा ठीक से? इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, now we'll do this 81. Okay, the question number 81. Yes, just read it once. The length of the elastic spring is A when tension is 4 Newton and it is B when the tension is 5 Newton. Then the length of the spring when the tension is 9 Newton is, ओके, देखो ठीक से, जब टेंशन 4 न्यूटन होता है तो उस समय उसका लेंथ ए है, और जब टेंशन 5 न्यूटन बनता है तो उसका लेंथ बी बनता है। यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं दिया है, लेंथ दिया है, समझो इसको ठीक से। देखो, अगर मान लो कि ये वायर है, ये सपोज वायर है, ठीक है, ओके, दिस इज द वायर whose length is a here। तो इस वायर का लेंथ कितना दिया है, a दिया है, और उस समय उसके ऊपर कितना वेट अटैच किया हुआ है,
4 न्यूटन का। ओके, तो ये 4 न्यूटन का वेट अटैच किया, उस समय उसका लेंथ ए बन गया। चलो ठीक है, उसका ओरिजिनल लेंथ कितना है हमको पता ही नहीं है, we don't know how much its original length is, but we directly know that when 4 Newton force is applied on the wire, then its length becomes A. Okay, so let us assume that the original length of the wire is going to be something like L. Okay, तो ओरिजिनल लेंथ जो है वो इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। समझो कि ये वायर इस तरह से है, जब उसके ऊपर कोई वेट अटैच नहीं किया था तो उस समय उसको हम बोलेंगे उसका ओरिजिनल लेंथ L था। ठीक है, तो ये लेंथ उसका बन गया L। ओके, अभी जबकि उसको हमने एक 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गया, और इस तरह से यहाँ पे ये देखो, तो ये जो लाइन है ये एक्चुअली उसका ओरिजिनल लेंथ है, लेकिन दिस विल बी द एक्सटेंशन। यहाँ से लेके यहाँ तक उसका एक्सटेंशन हो गया। वो कितना है हमको पता नहीं, बट इतना ही दिया है कि when the 4 Newton force is applied on the wire, then in that case the length of the wire becomes A here. So how much will be the extension? How will you find it out? देखो ये पूरा जो लेंथ है, तो ये पूरा लेंथ वायर का, this minus this will be the extension, correct है? So extension can be found out to be simply equal to A minus L. Very good, correct. So in this case the extension of the wire is going to be A minus L. वो याद रखो ठीक से, ठीक है ना? अभी दूसरा केस क्या दिया हुआ है देखो ठीक से, कि when the length of the wire becomes B when the tension is going to be 5 Newton. तो जब 5 न्यूटन का टेंशन अप्लाई किया जाता है तो उसका लेंथ और थोड़ा बढ़ जाता है और वो B इतने बन जाता है। तो अभी सपोज द सेम वायर इज सस्पेंडेड विथ अ टेंशन ऑफ 5 न्यूटन हियर, तो ये 5 न्यूटन का टेंशन हमने अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से उस वायर का लेंथ जो है वो कितना बन गया, B बन गया। ठीक है, तो अभी ये वायर का लेंथ B है। फिर से इस केस में भी इस वायर के कंपेयर इस वायर के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो हमको एक्सटेंशन मिलेगा B minus L. Do you agree with this? And here use the simple fact here that the extension in the wire is actually given by the formula F into capital L upon A into Y. Correct है? So here we have to use that the extension in the wire is directly proportional to the load applied to the wire. Correct है? तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि when in the first case the extension was actually A minus L, तो यहाँ पे A minus L इतना एक्सटेंशन था और उस समय फोर्स कितना था, 4 न्यूटन का था, और सेकेंड टाइम B minus L इतना एक्सटेंशन था और उस समय फोर्स कितना था, 5 न्यूटन का था। तो इसलिए यहाँ पे in the first case we can say that this A minus L will be the extension which should be proportional to the 4, right? And in the second case the extension is going to be B minus L here, which should be proportional to the force at that time, which is going to be 5 Newton. Correct hai? And here in this case, by just solving these two equations, suppose this equation number 1 and this equation number 2. So just by solving these two equations, we'll be able to find out this capital L, which will give us the length of the wire when the 9 Newton force is applied on it. So अभी इसमें देखो, अभी उससे भी आगे जाके तीसरा सिचुएशन यहाँ पे हमको डिस्कस किया हुआ है, जब इस वायर के लोएस्ट पॉइंट पे हम 9 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर देंगे। ये देखो अभी यहाँ पे 9 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है? तो उस समय इस वायर का लेंथ कितना होगा वो हमको ढूंढ के निकालना है। एक्सटेंशन नहीं है, फिर से हमको लेंथ ही ढूंढना है। टोटल लेंथ ऑफ द वायर हाउ मच इट विल बी, लेट अस टेक इट एज C। अगर उस समय का लेंथ अगर C मान लेते हैं तो एक्सटेंशन कितना होगा उस केस में, जरूर C minus L के बराबर होगा कि नहीं? तो C minus L will be the extension, and in that case we can see again that in the third case C minus L is actually going to be proportional to the force acting on the wire at that time, which is going to be 9. Correct hai? Yes. And now here if we just take the ratio of these two equations, first two equations को अगर हम divide करते हैं तो देखो हमको क्या मिलेगा। So we'll be able to get that A minus L, okay, this is A minus L upon B minus L comes out to be 4 upon 5, correct hai? And now if we just cross multiply here, then we get this 5 times of A minus
5 times of L, which is going to be equal to 4 times of B minus 4 times of L. And if we just shuffle these terms, तो इस 5L को अगर उस तरफ लेके जाएंगे और इस 4B को अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा 5A minus 4B is equal to 5L minus 4L. And here we can just get the value of L to be simply equal to 5A minus 4B. But what we want here is we want C here. ये C हमको निकालना है. What will be the final length of the wire when the wire is subjected to 9 Newton of force? तो 9 न्यूटन का लोड अप्लाई करने के बाद उसका लेंथ कितना होगा वो हमको ढूंढ के निकालना है. ओके, तो अभी इसमें क्या है ना, सी इस इक्वेशन के अंदर लाने के लिए, ठीक है, इसको रिकॉर्ड करके रखो ठीक से. ओके, तो अभी सी यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे और अभी 3 के साथ 1 को डिवाइड करेंगे. ठीक है, टेक द रेशियो ऑफ 3 and 1 और 3 and 2 ऑल्सो वी कैन से. तो अगर 3 इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 अगर करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, तो हमको मिलेगा C minus L, okay, divided by A minus L, because constant of proportionality we already don't know, right? That's why we are going to divide this. So here A C minus L upon A minus L, लेकिन C minus L का LHS RHS क्या है, 9 है और A minus L का RHS क्या है, 4 है. देखो, तो अगर हम उसको वहाँ पे डाल देंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा, and if we just cross multiply it here, then we can just be able to get that 4C minus 4L, right, which is going to be equal to 9A minus 9L. Yes, and then just simplify this, take this 4L in that side. Okay, 4L को उधर लेके जाओ क्योंकि 4C तो हमको चाहिए ना, तो 4C is kept as it is here, and here it will be 9A minus 9L plus 4L. How much this comes out to be? So 4C becomes actually equal to 9A kept as it is minus 5L. But don't forget here that we have already got the expression for L here. Just recall, L का जो वैल्यू है वो अगर यहाँ पे हमने डाल दिया तो उसमें से क्या मिलेगा, देखो, तो 4C can be written to be equal to 9A minus 5L, where L is nothing but 5A minus 4B. Okay, and now if we just simplify this further, then we can be able to get that 4C is equal to 9A. अच्छा, ये ब्रैकेट ओपन करो तो minus 25A बन जाएगा ये. So it becomes 25A and minus of minus plus, and it will be 5 4s are 20B, right? Yes, and then we can say this will be 4C, which is equal to, अब यहाँ पे 9A minus 25A क्या बनता है, minus 16A बनता है. So this is minus 16A and plus 20B kept as it is. So here it is 20B. Yes, and then this 4C, if we just divide this whole thing by 4, then we can just get C to be simply equal to, अच्छा, minus 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा minus 4A, बराबर, and plus here it will be 5B. Okay, so 5B, and hence we can say the final answer here will be 5B minus 4A. समझा ठीक से? So we can select the final length of the wire to be simply equal to 5B minus 4A, which is already there in this option 2 here. 5B minus 4A, it is kept here. Okay, so this will actually be the correct answer. Okay, but see here we have solved this by using this method, no doubt, but there is another quick method here. एक बहुत important method है यहाँ पे जो तुमको समझना होगा. देखो, वो ये है कि देखो ये L जो है ना, वो L का कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया, क्या नहीं, ओरिजिनल लेंथ जो है वो हमने उसका L एज्यूम किया,
और उसके रेफरेंस में हर एक का एक्सटेंशन निकाला, ठीक है। अभी थोड़ा उसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर हम ऐसा करते कि देखो ठीक से, अभी अगर इस ए को ही अगर हम ओरिजिनल लेंथ बोल देते, टेक दिस ए इटसेल्फ एज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, ओके, ये हमारा ओरिजिनल लेंथ है, और उस समय का जो फोर्स है तो वो फोर्स एक्चुअली 0 कंसिडर करना है हमको। जब 4 न्यूटन फोर्स एक्ट होता है, मतलब कुछ भी नहीं है, फोर्स कुछ भी नहीं है, अभी ऐसा अज्यूम कर लो कि 4 न्यूटन इज द लोएस्ट फोर्स and this A is going to be the lowest length, so we can consider this A as the original length and 4 Newton as the zero force. Okay, अभी ये सोचो कि जब हम A से B की तरफ जाते हैं तो उसमें एक्सटेंशन कितना हो गया, ठीक है, एक्सटेंशन कितना हो गया। नहीं तो ऐसा करेंगे, ये जो पूरा ये है मैं अलग इसके ऊपर लेता हूं, दिस पार्ट, ओके। देखो अभी ठीक से यहाँ पे, अगर हमें अब एज्यूम किया कि ए जो है वो उसका ओरिजिनल लेंथ है, ऐसे मान लो, ठीक है, और फिर जो इस समय का जो फोर्स है 4 न्यूटन का, वो 0 फोर्स है, ऐसे मान लो, ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लो। और अभी जबकि यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स बनता है, तो दैट मीन्स व्हाट इज द एडिशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर हियर, एडिशनल फोर्स कितना है, एडिशनल फोर्स we can say 4 Newton force was already acting on the wire, so additional force will be 5 minus 4, which is actually going to be 1 Newton only. And what is the extension produced by that 1 Newton only, तो उस 1 न्यूटन ने कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे A और B के बीच में का जो डिफरेंस है तो वो बनने वाला है B माइनस A, करेक्ट है। तो ये B माइनस A ये हो गया उसका एक्सटेंशन, ओके, B माइनस A, यस। अभी ये फर्स्ट केस में हो गया, चलो ठीक है। अभी अगर मान लो कि ये इसका ही सेकंड केस जो हमने बनाया था, थर्ड केस मतलब, जबकि इसके साथ ही और एक वायर हमने अटैच कर दिया था और उस समय 9 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा था, बराबर, 9 न्यूटन। तो ये 9 न्यूटन का फोर्स जब एक्ट हो रहा होगा तो उस समय अगर उसका लेंथ मान लो C बन गया है, तो अभी ये 9 न्यूटन का फोर्स मतलब एडिशनल कितना हुआ, what additional force is acting on this wire, we have to compare it with this 4 Newton again. So 4 Newton से 9 Newton का increment मतलब additional force कितना हो गया, so we can say that the additional force will actually be 9 minus 4, which is going to be 5 Newton, correct है। So 5 Newton का force, but this 5 Newton force produces a extension in the wire. How much is that extension here? अभी देखो यहाँ पे C इतना लेंथ बनता है और ओरिजिनल लेंथ कितना था वायर का, A था, तो इसलिए फिर यहाँ पे C माइनस A विल बिकम द एक्सटेंशन ऑफ द वायर। एंड नाउ एज वी नो दैट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज प्रोपोर्शनल टू द एडिशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। तो अगर ये बात यूज करेंगे तो देखो एक ही बार हमको करना पड़ेगा रेशियो। तो देखो एक्सटेंशन कितना है फर्स्ट केस में, B minus A, correct है। So this B minus A will be proportional to the additional force which is of 1 Newton. And the second case में C minus A is the extension in the wire which should be proportional to the 5 Newton force. Okay. So if just we simplify this further, अगर इन दोनों का रेशियो ले लेंगे ना तो देखो क्या होगा, if we take just the ratio of these two, then we can just get this as B minus A upon C minus A, which comes out to be equal to 1 upon 5, correct है। and if we just cross multiply it here, then we can get this simplified as 5 times of B minus 5 times of A should be equal to C minus A, right? And if we just take this A in this side, then we can get this 5B minus 5A plus A should be equal to C, and immediately we can just get this C to be simplified as 5B minus 4A, which is already we have obtained it as a final answer. Okay, तो अभी अभी हमने जो आंसर निकाला था तो वही हमको फिर से मिल रहा है,
Yes, this was easy because we have considered this A as a original length and the extension as compared to this A here, and the additional force as compared to 4 Newton here, and also at this point also यहाँ पे 9 न्यूटन का जो फोर्स है वो भी एडिशनल फोर्स कितना है, तो ये एडिशनल फोर्स का कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो ये तुमको इजी जाएगा जरूर. चलो ठीक है. So if you want you can take the screenshot of this also. So now here we will stop